Hello everyone, welcome back to my channel Mattrix Ignite Your Mind. This is JEE Booster Set 3 problem video. But before we begin, as always, those who have not subscribed yet, please do subscribe and press the bell icon for more update. You can get this type of questions on my telegram channel mattrix.edu. Let's start. This is JEE Booster 3 problem number 1. The incenter of the triangle with vertices 1 root 3, 0, 0 and 2, 0 is 1, root 3 by 2, 2 by 3, 1 by root 3, 2 by 3, root 3 by 2, 1, 1 by root 3. पहले देख लेते हैं ये कौन सा वाले साल में आया था। आईआईटी का 2000 साल में जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसमें आया था। क्या करने के लिए बोला है, हमें एक ट्रायंगल लेने के लिए बोला गया है। पहले फर्स्ट वी टेक ए ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स दे देते हैं 1, रूट 3, 0, 0, वर्टिसेस दे देते हैं 2, 0, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल के अगर नाम देते ए बी सी, इफ वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 and BC equals to root under 2 square plus 0 that equals to 2 and AC equals to root under 2 minus 1 whole square plus root 3 square, it is equals to root under 4 equals to 2. तो देख के पता चल रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। Then what is the incenter? The incenter is centroid because it's a equilateral triangle. Hence summation of xi by 3 comma summation of yi by 3, it is center. Then what is the value of the incenter is 1 plus 0 plus 2 divided by 3 comma root 3 plus 0 plus 0 divided by 3, that is equals to 3 by 3, that is 1, and root 3 by 3, 1 by root 3. देख लेते हैं पॉइंट कौन सा मिल रहा है। 1, 1 by root 3, that is equals to D. Answer is D. Okay, I hope you learned something. If you like the video, then press the like button and share it with your friends. Thank you. Bye bye. Stay tuned for the next class.